सर मैं चाइना से काम कर रहा हूँ यूएस में, तो मुझे जो लीड टाइम मिल रहा है वो पहले मुझे 20 डेज का लीड टाइम मिलता था, अब मुझे 70 डेज का लीड टाइम मिल रहा है। चाइना की प्रोडक्शन इसको बहुत ऊपर है, ठीक है। मैं क्योंकि मेरे पास इस वक्त उसके आपकी क्वेश्चन की स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ये बात कर सकता हूँ कि उनकी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से उनके रॉ मटीरियल प्राइसेस अप हैं, उन्होंने अपने रेट्स रिवाइज किए हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन बहुत बिजी है। मेरा नहीं ख्याल कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन से उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा या वो रिलैक्स करेंगे। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि इतनी मोटिवेट हो गया कि इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं, लेकिन मैं अगर एज अ बिजनेस पर्सन सोचूँ तो मुझे इन्फ्लेशन बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने मार्केट स्टॉक करके रहा हूँ, 1 महीने बाद बेच दूँ, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इन्फ्लेशन में जो मेरा प्रॉफिट आई होगा, मैं प्रोडक्शन करके रहा हूँ। तो कोई ऐसे सिनेरियो हैं कि इन्फ्लेशन कोई अच्छी चीज़ हो, लेकिन इसका रिप्लाई बहुत क्विकली चाहिए कि वो यू हैव सर देखिए, आपने फर्ज करें कि आपने कहना कि मैंने अपने बेटे को बाइक लेके देनी है, आपने वो स्टॉक करके कितने पैसे कमाने हैं, बाइक इतनी महंगी हो जानी है, अल्टीमेटली नुकसान आपको ही होना है। वो उनके बारे में सोचें, ठीक है, अपने बारे में सोचना अगर सब बंद कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। एक दोबारा मेरे हमारे से कुछ बात हुई है तो आई शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमिक थ्योरी है, वो मेरी बात में आपने देख लिया बहुत ही अपसेट होते हैं, क्योंकि और फिर वो यही कहते हैं कि ये तो रेटोरिक है, ये जज्बाती बातें हैं, ये मैं आपकी कॉन्फर्मेशन बायस कर रहा हूँ बताया, और रियलिटी से बड़ी दूर है, आउटडेटेड है, ये है वो है, सोशलिज्म में ये हो गया वो हो गया। बट आई थिंक कि यू हैव नॉट ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इक्विलिब्रियम की थियरी सिर्फ ये नहीं कह रही, और केन सिर्फ ये नहीं कह रहा, मिन्स्की सिर्फ ये नहीं कह रहा, और ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सिर्फ ये नहीं कह रहे कि market is moving towards or is not moving towards equilibrium. That's not my point. The alternative to the idea that the market moves to a certain equilibrium is not that the market does not is in disequilibrium. No, that's not what is being stated. What is being stated is that that equilibrium point to which the market moves is one that achieves what we call Pareto optimality, which is that nobody can be made better off without making somebody else worse off. That's the point. The point isn't कि मार्केट के मैकेनिज्म्स नहीं चल रहे हैं। आपने खुद कहा कि भाई वो लो लेवल या हाई लेवल पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, एग्री विद यू। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो लो लेवल और हाई लेवल पे जब वो खड़ा हो जाता है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, it does not achieve Pareto optimality. It does not achieve a high growth rate or any of the macroeconomic objectives that society or the government wants. In fact, it can get stuck in a low equilibrium, जहाँ से वो निकलेगा ही नहीं जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो। ये गेम्स की थियरी के साथ। दूसरी आपने बात की, दूसरी प्लीज रिजिडिटी को आपने कहा कि पब्लिक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। नाउ आपने खुद इकोनॉमिक थियरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने प्रूव किया कि पब्लिक इज नॉट रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स। हम तो पहली चीज ही पढ़ाते हैं, पब्लिक रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स। आपने कहा पब्लिक डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, दैट मींस आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक थियरी कहीं ना कहीं वर्किंग हो रही है। आखिर ऑल्टरनेटिव क्या है? मैंने तो ऑल्टरनेटिव इसलिए नहीं बयान किया क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं आखिर में करूंगा। आई गिव यू 12 सॉल्यूशंस, नॉट वन। फर्स्ट थिंग, you must consider the possibility, और आपको बड़ी बुरी लगेगी बातें, बिकॉज मैंने कहा ट्रेडिशनल न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स को बड़ी बुरी होती। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था किसी जमाने में, we can consider that. Budgeting of international trade through control over letters of credit must be considered by the government. Tariffs and barriers on non-essential imports must be considered. Tariff rebates on imports used for exports must be considered. Export subsidies have been considered and still been given, and in the early period of the youth, that is how we industrialized. Infant and industry protection and promotion must be considered. State-owned model factories must be considered that can be emulated by the private sector. State financing of risky ventures and directed credits must be considered. This is the market kiya karta hai. Support for R&D by the government
Investment planning and manpower planning must be considered by the government. Promotion of institutions for public-private partnership, etc. All of these things can be considered. These are economic policies that Germany, Japan, वगैरह बहुत सारे मुल्कों ने implement किए, मैंने वहीं से copy paste किए. And government has to be part of the solution. Thank you very much, sir. और इश्यू पे जो और डिबेट शुरू हो गए वो हम उसका एक अलग से हम एक सेशन रखते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी में बेशक करते हैं. तो मैं डॉक्टर मुमताज साहब से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ दे. अगर आप कभी इस मुकाम पे आ जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ या प्लानिंग डिवीजन के हेड बन जाएँ, तो मुझे 1 और 2 पॉइंट एजेंडा देंगे कि आप क्या करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. पहले तो बनवाएं मुझे प्राइम मिनिस्टर. अगली बार बात करते हैं. आई थिंक मैं थोड़ा सा जस्ट बेसिकली एक कमेंट है सबका इस्तेमाल मैं जवाब देता हूँ कि ये पार्लर की बात भी हो गई है, सेंटर राइट की बात भी हो गई है. लेकिन आज यूनिवर्सिटी ने सेशन अरेंज किया और यहाँ इस्लाम की बात नहीं है. इकोनॉमिक्स भी कोई सोल्यूशन देती है इस इन्फ्लेशन का या नहीं देती, आपको सोचना चाहिए. और वो जो आप अपने यूनिवर्सिटी में डिबेट करेंगे, एक मिनट आपको क्या लग रहा है, हमें लग रहा है इसलिए आपने जरा ये इस तरह से किया जो शायद मैं आज यूनिवर्सिटी में करते तो वहाँ इस्लामिक इकोनॉमिक्स का है. We have 2 departments, Islamic economics और economics का लेवल. ये सेशन इकोनॉमिक्स वाले कर रहे हैं. जब इकोनॉमिक इस्लामिक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट करेगा तो वो फिर सारा कुछ उसमें there are 2 solutions which I would like to what we said. On basis of this discussion as well. The reason is one is what we said that we are importing each and everything what Shreeds are very excellently said right from you can say everything you can the consumer items. Look at suppose the Lehman brother has a claim that when their one product at least is available in each and every household in Pakistan. This is the claim of the Lehman brother, either in the form of detergent or whatever. So we importing mostly each and every. So as a policy maker, whatsoever planning commission or wherever I should be supposed. Number one is that we have to basically, on the basis of discussion as well, that we have to have lesser imports, particularly consumable items. And the secondly, which is also very critical issue, and particularly becoming like for the world after this Ukraine and Russian war, COVID and this and that is the energy. Means what we are doing, instead of suppose the most cheapest source of energy as hydel power, and having a best source of hydel power running water from there down, we are not producing energy from it. And what we are doing as well, that instead of suppose solar we have, instead of suppose wind we have, what we are doing, suppose we are producing some kind of energy sources, are using those energy sources which are very expensive, we are importing that as well, and our import bill. And the third which I would like to look at the edible oils, what we are doing. Okay, how much money we are spending on it. Okay. So I think if we can do these 3 things only, very shortly I am saying it because it is running time as well. So not banning the imports, not basically one way or the other crushing this demand, but rationalizing it. And secondly the energy, and third is basically the inflation which is prevailing due to the food inflation prevailing due to the kind of edible oil and so on. So I think there should be a rational policy on all this. Thank you very much. जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारा बड़ा एसेंशियल पार्ट होते हैं हमारी डिस्कशन का. वो मैं उनकी तरफ भी आऊँगा. थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर शरीफ, अगर आप एज ए कंज्यूमर सोचें तो हमें क्या करना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके एज ए कंज्यूमर? Well, one thing is the expectation कि हमें जो फ्यूचर के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस राइज हो, try to be simple.
cutting some of your consumption items and choosing the alternatives which are, you can say, substitutes. Because the thing is that overall whole culture of food items it will be boosting in Ramadan, and I think after that might be the inflation rate would be more than 50% after a month. So what we generally do that government or people try to play their role to reduce the expected inflation in the near future. The second thing is that you